Today we are going to learn a lesson Calm Chore from class 8 lesson 10. Calm chore means laziness, being idle without doing anything. The writer of the story is Ismat Sukthai ji. The writer had shared her childhood experience. Hers is a joint family where they have grandma, grandpa, aunt, uncle, cousin, nephew, and so many. Imagine a house with so many people where obviously there will be so many household chores. Household chores means work to do at home. Here, the children in the house stroll here and there doing nothing. The story starts like the father and mother have a strong discussion about the children who becomes fat by doing nothing. Father decides to stop the servants of the house from work and ask the children to help Amma in her chores. Children agrees to do all the work, but they create a mess in everything they do. The house becomes upside down by the work of the children. So children, let's have fun by reading the story. बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामजोर कहीं के। After a long discussion, वाद विवाद, it has been decided, तय हुआ, that the servants has to be literally stopped from work. After all, what for these fat children? They do not even drink water by shaking. Hilka, they should have the habit of doing their work themselves. Khud karna. Why are they so lazy? These are the words from the father of the family. The parents were very much worried about the laziness of the children. तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उठम मझाने के सिवा कुछ नहीं करते. These are the words from Amma. You guys are nothing. There are so many work to do, but you children simply roam around. उठम मझाने, doing nothing. और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते. हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया. And really we wondered, why don't we work? What do we expend that is scourge in drinking water by shaking? So we immediately started to drink water by shaking. Hil hilakar. The meaning is that the children of the house decided to work at home. So the children first go to the place where the water has been kept. All the children gathered in one place. हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के धबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए. लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया. सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग. We get a bang, धक्के while moving, and we were under pressure, धबैल of somebody, but we just bear it, सह जाए. There was a fierce battle, Gamasan Yudh, near the water pot itself. The jug, Surahiya, rolled one side, the pot, Matke, gone to the other side. The clothes got wet. That was different. यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया. Seeing the mess, अम्मा decided, निश्चय किया, and said ironically, they work very well. करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हर खिच नहीं मिलेगा, समझे? Appa said like, why don't they work? Those who don't work will not certainly, हर खिच, get dinner tonight, understand? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं. So that has become a royal order, शाही फरमान, in the writer's house. हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए. हमने दुहाई दी. We the children cried out, दुहाई दी, by saying, we are ready to do work. Tell us the work. बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो. मिसाल के लिए, यह धरी कितनी मैली
हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। फादर सेड देयर आर सो मेनी वर्क दैट यू कैन डू। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के लिए, द कारपेट इज सो डर्टी, मैली। कोर्टयार्ड, आंगन, इज फुल ऑफ गार्बेज। टू वाटर द ट्रीज, पेड़ों। Also, father said, you people need not do this work for free, मुफ्त. You all will be paid salary, तनख्वाह. अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। So, father has said some work and also he has referred hawala to some work to do. Like Mali, that is gardener, is getting paid, tanakwah. If all the children get together, milker, and watered means, thus the father motivated the children to do work. एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अम्मा interrupted the father's speech and pleaded, याचना की, Oh no, for God's sake, the house will be flooded, बाढ़ आ जाएगी. Till then, we dreamt of salary, that is सपने देखते. Dreaming means सपने देखते. We dreamt of salary and went to work. एक दिन फर्शी धरी पर बहुत से बच्चे छूट गए और चारों ओर से खोने पकड़कर छड़कना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। One day a lot of kids gathered, छुट गए, near the floor carpet, फर्शी धरी. They started to jerk off, छड़कना, the carpet by holding the 4 corners of it, चारों ओर से खोने. 2 to 4 kids holding a stick, लकड़ियाँ लेकर, started to beat, पिढ़ाई, the smoke covered with dust, that is धुआंधार. Children started to beat the carpet hardly so as to remove the dust from the carpet. सारा घर धूल से हट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गई. सारी धूल जो धरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई. बुरा हाल हो गया सबका. हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया. वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया. The whole house is covered with dust. Everybody started coughing, खांसते, and became breathless, बेदम हो गया. All the dust which was there in the carpet, which was there in the floor, now in everybody's head. Also the dust went into the नाकों और आंखों, nose and eyes. Everybody's condition hall becomes very bad, बुरा. So we were immediately evacuated, that is thrown out, निकाला गया, to the आंगन, courtyard. So we immediately decided to sweep the courtyard. झाड़ू देने means sweeping. झाड़ू is broomstick. झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उठ गए. जितनी सींखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा. अम्मा ने सिर पीट लिया. भाई, एक बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे. जब ज़रा ज़रा सी बात पर ठोकने लगे तो बस हो चुका काम. Just because there is only one broomstick and ummidwar, that is candidate, here children, who is going to get salary or so many. What happened is within seconds, क्षण भर में, the parts of broomstick flew away. How much ever sinking, that is strands of broomstick, they grabbed, they started to sweep holding it up or down, ulte seedhe. Amma seeing all this started to beat her head herself, पीट लिया. The children started thinking like only. Then the elder people, बुजुर्ग, let us to do work we can. If they interrupt us, ठोकने लगे, for these petty things we can't do the work properly. असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए. बस यह ख्याल आते ही तुरंत धरी पर पानी छिड़का गया. एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई.
Actually, a little water should be sprinkled, chidaklena, before sweeping. As soon as this thought, khayal, appeared, immediately water is being sprinkled on the carpet. Already the carpet is covered with dust. Now what happened is dust becomes mud, कीचड़, when the water being sprinkled on that. अब सब आंगन से भी निकाले गए. तय हुआ कि पेटों को पानी दिया जाए. बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई. जिन्हें ये चीज़ों भी ना मिली वे ठोंगे, कटोरे और ग्लास ही ले भागे. Now the children were thrown out from the courtyard also. Then they decided to water the trees. Then all the buckets, cans, plates, jugs, pans of the houses were looted. Those who did not even get these things ran away with bowls and glasses. अब सब लोग नल पर टूट पड़े. यहाँ भी वह घमासान मच्छी की क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके. डूसम ढास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और ठोंगे. पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन. फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और धमदार मौसियों, फूफियों की घुमक बेची गई. फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई. Now everybody gathered near the water tap. टूट पड़े means attacking the tap. Here also there was a Ghamazan Machi, that is fierce battle. The excitement is no vessel has got a single drop of water. They started pushing and fighting with each other. There happened a mess, like pan got into the bucket, the cans was above the pan, and also jugs and bowls. First they were pushing each other, then they started hitting. Kuhiniya means hitting with elbows, and with vessels, bhardhan. Immediately to stop the fight, big brother, sister, maternal aunt and uncle were sent to control them. The kids dropped their weapons. Here weapons means all the household utensils. And surrender. पीठ दिखा गई. इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संज्ञा काफ़ी नहीं थी. पास के बंगलों से नौकर आए और 4 अनाप्रदी बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए. In this fight, some children got soaked in mud. कीचड़ में लथपथ हो गए. To clean them and bath them and also to change their clothes, present, varthaman, number, sankhya of servants were not enough. Some nearby bungalow servants were arrived and they were paid 4 annas each per child for bathing them. हम लोग घायल हो गए कि सचमुच एक सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है. कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे. We were convinced, घायल हो गए, that cleaning work is not our thing, nor we can take care of the trees. At least we can lock the hens, मुर्गियां. And that's it. We started shooing the hens with bamboo, bonds and whatever sticks we get. बस शाम ही से जुबान छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी. चल धड़बे, चल धड़बे. With the bamboo and the stick we got, we started shooing like chal dhadbe dhadbe. पर साहब, मूर्खियाँ को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था. ऊंट फड़ाक इधर उधर कूदने लगी. 2 मूर्खियाँ घीर की प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्ग लगा रही थी, थोड़ती फटफटाती हुई निकल गई. The writer says like, See साहब, chickens were also ordered to stand against us. हमारे विरुद्ध भड़का रखा था. They started jumping here and there like ऊंट पड़ांग. That is like the shape of the camel hunchback. It started to jump here and there. 2 chickens crossed the bowl of the rice pudding. This pudding is gheer. The pudding is being garnished with silver lining. चांदी के वर्क. And the chickens दौड़ती फटफटाती. It ran in a hurry.